unless the government doesn't relent, they're going to sit put. Now, farmers have given a clarion call to intensify the protests against the new farm laws. The farmers claim that they're ready to talk, but the centre has to roll back 3 farm laws. Upping the ante against the centre, thousands of farmers have started their Delhi Chalo march from Rajasthan's Shahjahanpur through the Jaipur-Delhi highway. Tomorrow, the protesters will gather outside the DC offices, followed by a hunger strike between 8 a.m. to 5 p.m. On Tuesday, women and labourers will join in the protests. The farm union leaders have decided to sit on indefinite strike on December 19th if the government doesn't relent. So far, farmers have blocked Ghazipur, Palwal, Tikri and Singhu borders of Delhi. The Chilla border between Delhi and Uttar Pradesh has now opened up after being shut for 12 days. देखो हमारा मन थोड़ी है भाई, हमारा मन किसानों का तो मन खेत में रहा है, लेकिन जो सरकार का मन है हमें जान नहीं दे रही है। इससे हमारी बात सुन ले हम तो चले जाएंगे घर को। राजस्थान पुलिस के साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन है और जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलेंगे हम लोग बैरिकेडिंग करके उनको रोकने की कोशिश करेंगे। हमने अल्टरनेट रूट्स प्लान कर रखे हैं जो भिवाड़ी होते हुए भी निकलते हैं और रेवाड़ी होते हुए भी निकलते हैं, तो उनके जरिए हम डाइवर्ट कर देंगे जिससे लोगों को कोई इनकन्वीनियंस नहीं हो। Now, in a move to show solidarity with the protesting farmers, some ex-soldiers have pledged to return their awards. ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਰਤੀ ਚੱਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤੀ ਚੱਕਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। मैं अपनी कुर्बानी ये लाऊंगा देश की खातर। कीर्ति चक्रां की कोई परवाह नहीं की। आज जो यहाँ पे पूरे सैनिकों का जो जत्था आया है टिकरी बॉर्डर के ऊपर, ये सिर्फ हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि सैनिक जो अपने मेडलों के साथ में आज यहाँ पूछ के बिल्कुल सख्त लहजे में कि किसानों के ऊपर जो आपने काले कानून थोपे गए हैं उनकी तुरंत प्रभाव से वापसी हो। बड़े शर्म की बात है केंद्र सरकार के लिए कि कीर्ति चक्र आ गया और हो सकता है कि आने वाले दिन में कि परमवीर चक्र भी आ जाए। Now, fears of pro-Khalistani elements hijacking the farmers' stir has once again taken to force here. Mahatma Gandhi's statue in Washington, D.C. was defaced and draped in Khalistani flag in protest against the farm laws. People were seen waving Khalistani flags and raising pro-Khalistan slogans at the spot. Let's take a listen. The trust deficit peaks between the government and farmers, with talks deadlocked and Kisan Kranti escalating. The spotlight now is if farmers' agitation is being hijacked by anti-national elements. In Washington, D.C., Mahatma Gandhi's statue was defaced and draped with Khalistani flag in protest against farm laws on Sunday. Protesters were seen displaying anti-Modi placards and raising pro-Khalistan slogans. There was one peaceful protest that was planned outside the Indian embassy or in Washington DC, so to say, wherein it then turned out to become an event where certain elements went and desecrated the Mahatma Gandhi statue. Not the first time that it has happened. The Indian embassy has lodged a strong protest and asked for security of the of property and for the authorities to ensure that the culprits are brought to book. We oppose Khalistani because of this attitude, and what they have done is condemnable. On the 6th of December, Khalistani flags were seen at a protest held outside the Indian High Commission in London. The Indian Embassy in Canada has also complained of such incidents. किसानों के साथ में जिस तरह के लोग इनके साथ में मिल चुके हैं, कुछ लोग अंदर घुस चुके हैं जो समझौता नहीं चाहते। वो किसी भी तरह से ये चाहते हैं कि ये आंदोलन आगे बढ़े और उनकी राजनीतिक रोटियां सेकती रहे, जिसके अंदर कुछ राजनीतिक पार्टियां भी है, कम्युनिस्ट भी है, नक्सलवादी भी इसके अंदर घुस चुके हैं। Earlier, protesters displayed posters of activists accused of Naxal links and those accused in Delhi riots seeking their release. Intelligence inputs indicate that there are fears that left-wing extremists are hijacking the protests and misleading farmers. I see a very sinister design to hijack the whole movement. Be it the Khalistani element, I believe it is not right.
but there is enough evidence available that Tukde Tukde gang is seeking to overtake. Farm union leaders, meanwhile, vote to remove posters lauding Delhi riots accused Sharjeel Imam and Umar Khalid. अगर कोई शक्ति ऐसे कदम उठाती है जैसे कि ये इमाम शेरगिल या कोई किसी को छोड़ने की बात आती है इंटेलेक्चुअल पर्सन्स की, तो दिस इज टोटली डिनाइड बाय संयुक्त किसान मोर्चा कि इस गवर्नमेंट के दिल में जड़ी गलत भावना बनी हुई है. वी आर द टेररिस्ट, वी आर द खालिस्तानी, वी आर डूइंग आवर वर्क विद ऑनेस्टली इन द पंजाब. As the farmer agitation continues to intensify, the Intelligence Bureau has warned of serious consequences, saying that the ultra-left has hijacked the movement. There is also signs and indications. They have said that there is a Khalistani extremist element. However, the farmers have denied these allegations, saying it's the government which is trying to create one fissures and the other is trying to defame the agitation. They say this is not going to deter them and they will only continue to intensify the stir. With camera person Sanjeev, this is Kamaljeet Sandhu in Delhi for India Today.